हाँ धवल क्या पूछ रहा है? हाउ डू वी गेट इक्वेशन ऑफ m by ei? वी हैव इक्वेशन ऑफ m by I इक्वल टू see, only thing I'll tell you right now is that immediate answer is that Dhaval कि actually we have not derived it, right? So because if you would have derived it, you would have got it. I have directly used this definition because it's more like a geometry. काफी geometry भी use की है इसमें इसको derive करने में apart from physics. So इतना ज़्यादा important होता नहीं है इसका derivation गेट एस्पिरेंट्स के लिए. गेट एस्पिरेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? So that's why I didn't derived it. So once you do it, you can refer any standard book, you will get to it. But I don't recommend you right now to get into derivation. Some derivation are important which explains you the physics, but there are certain derivations which does not have a lot of physical significance in them. So since they don't have lot of physical significance associated with them, we should neglect it and we should use the information. That's it. But still, for your curiosity, you can refer any standard book for this. R.C. Hibbeler and Andrew Peitel, and I think these are two good books. And the other one is that of Timoshenko, teamed with I'm not getting the name. I'll let you know the name. One is Timoshenko, but I think one of his student along with Timoshenko has written his book क्योंकि Timoshenko की book बहुत concise है. So beginners के लिए थोड़ा difficult होता है उसको समझना. But the one which is his student made with him is relatively the more expanded version of it. Right now, I had that book, but I don't think in this library. I have it in another library. I'll just missing the name of one of the author. It's a very good book, excellent book. Okay, so next theorem I'll introduce you. Theorem 2. Let us understand what is tangential deviation. Any curve. Let's say there's any curve. Like, अब मुझे टेंजेंशियल डेविएशन निकालना है किसी भी एक पॉइंट का ए का. तो टेंजेंशियल डेविएशन होता क्या है? टेंजेंशियल डेविएशन मतलब डेविएशन फ्रॉम अ टेंजेंट. तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर इसका टेंजेंशियल डेविएशन निकालना है? तो आपको पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा टेंजेंट. तो टेंजेंट के लिए आपको पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा. लेट्स से बी पॉइंट लाइक दिस. So this is tangent at B. So the vertical deviation, this vertical deviation is tangential deviation of A. ऐसे लिखते हैं इसको, tangential deviation of A with respect to tangent at B. Okay, so just start when इसको समझना चालू करें आप. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हमारे बीम की केस में बात करते हैं. ये हमें क्यों यूजफुल हो सकता है? देखिए ये इलास्टिक कर्व है आपका, ये दो पॉइंट है इलास्टिक कर्व पर बी और ए. अगर मैं ए पे टेंजेंट बनाऊं, दिस टेंजेंट एट ए,
और मैं बी का वर्टिकल डेविएशन देखूं टेंजेंट एट ए से, तो इट इज टी। बताइए ए बी आएगा कि बी आएगा? वेटिंग, ए बी आएगा और क्या बी आएगा? प्रज्वल सेज बी ए, ओके। आशी सेज बी ए, नम्रता सेज बी ए, ओके। करेक्ट, गुड। So this is tangential deviation of B with respect to tangent at A. So this is tangent at A, right? And you are measuring deviation of B. तो जिसका deviation measure करते हैं वो पहले आता है, और tangent वाले जिस जहाँ पे tangent बना है वो बाद में आता है. And you can see that the tangential deviation of B with respect to A is nothing but y max. एक और एग्जांपल देख सकते हैं. Let's talk about this, guys. Let's say simply supported beam. ये इलास्टिक कर्व है. आपको ये कैलकुलेट करना है y max. तो क्या लगा, थोड़ा सा अपना अगर आप एप्टीट्यूड यूज करोगे तो रियलाइज दैट एक तो ये जीरो स्लोप की लोकेशन है आपकी. तो अगर आप ए का बी से टेंजेंशियल डेविएशन मेजर करोगे, टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, you will get this y max like that. Okay, so I have explained you how to calculate tangential deviation of up 2 points of a point on elastic curve. So this is how you calculate tangential deviation of a point on elastic curve. What this theorem states that, let us understand it. Tangential deviation equal to first moment of area of what, m by ei diagram about a point whose deviation is measured. I'll explain you that. Let's take this, guys. We'll talk about it. Okay, we'll talk about it. चलिए, अब यहाँ से थीटा है, थीटा भी हटा देता हूँ मैं, और बाकी सब रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम. लेट मी मेक इट सिंपल. तो ये पॉइंट है आपका सी, लेट्स से, और वी हैव टेकन इट एज ए डैश, तो लेट इट बी ए डैश. तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए डैश. तो टी बी ए डैश वुड बी इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया between A dash and B
फ्रॉम, किसका टेंजेंशियल डेविएशन निकाला है आपने? दिस इज टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। तो फ्रॉम बी, जहां से निकाल रहे हो वहां से। और यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया बिटवीन ये सिर्फ एग्जांपल है, ए बी कल से चेंज हो सकते हैं, ए बी ए भी हो सकता है, राइट? तो टेक केयर ऑफ दैट। और टी बी ए अगर आप लिखते हो तो ये तो ए एंड बी रहेगा, बट ये ए इन केस ऑफ टी बी ए, बी इन केस ऑफ, सॉरी ए इन केस ऑफ टी ए बी इन केस ऑफ टी बी। सिंपल। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कैसे निकालोगे? एरिया निकाल लो। व्हाट इज द एरिया? हाफ बेस into height L मल्टीप्लाई बाय मोमेंट ऑफ एरिया। कैसे लोगे? पूरे के पूरे एरिया को सेंट्रॉइड पर रख दो। We know that it is located 12 upon 3 from this side is 12 upon 3. PL square upon 3PL. That's it. Right? So this is like the problem. I'll give you an example problem to solve for simply supported. You try, then I'll solve. For simplicity, I've taken it at center. और एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि our answers matched, right? Obviously they had to. It is PL cube upon 3. यहाँ पर कुछ गलती की है क्या मैं? हाँ, PL cube upon PL cube upon 3PL, right? और next is this is a very fast method. You can see that. चलिए अब ये कैलकुलेट करिए। Draw the M by A diagram first, then calculate the slope, then calculate the deflection. Do that. P square L upon 8 EI
आफ्ताब स्लोप चेक कर, स्लोप चेक कर अपना। यस, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर यू स्टार्ट विथ 0, PL/4 का एरिया है आपका, तो ये भी PL/4, फिर माइनस ले जाएगा, 0 हो जाएगा। M/A डायग्राम कैसे बनेगा आपका? M/A डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, PL/4 ही है, like that. Now you need to calculate the slope first. स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे? एक तो जीरो वाला पता कर लो। अब जीरो वाला पता होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर सिमेट्री है इसलिए पता है आपको कि ये जीरो वाला है। दिस एंगल A, theta A is nothing but area between these 2 points. These 2 points. So theta equal to PL upon 4 EI, half base into height, like that. Good, Rahul. Next would be the deflection. So this would be TAV, tangential deviation of A with respect to tangent at B, would be the Y max. And for that, you have to take first moment of area of this area about this point, A point. This would be like this length will be 2L/3. The 2 into L is L/2/3. So this becomes L/3. So slope is equal to Y equal to area. Already we have calculated PL square upon 16 EI into L/3 is PL cube upon 48 PL. So method or the problem becomes very simple. So these were two very simple problems again I have solved by this method. But now I am going to show you some more. चलो पहले एक सिंपल प्रॉब्लम और सॉल्व कर लो, फिर थोड़ा सा एक अच्छा डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. I want answer from everyone now. Do it, everyone.
Correct, Aftab. Aftab has the right answer. Correct, Prajwal. There won't be any shear force. Shear force is zero. And bending moment diagram would be like this. Anti-clockwise नीचे. Stretch. Clockwise ऊपर. Right? So that is all your M naught. अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर? डिफ्लेक्शन निकालना है, राइट? लेट्स से दिस इज योर डायग्राम. तो टेंजेंशियल डेविएशन, पहले तो आप ये दो पॉइंट्स ले लीजिए, ए और बी. बी पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा आपका टेंजेंट, ये आ जाएगा आपका थीटा बी, विच इज एंगल बिटवीन टेंजेंट एट ए एंड बी. तो ये एरिया हो जाएगा आपका पूरा. अब उसको सॉल्व करने के लिए पहले एम बाई ये डायग्राम बना लीजिए. एम नॉट बाई ई आई, एम नॉट बाई एल, half base into height will give you the area. Like that. And y will be equal to the tangential deviation of b with respect to tangent at a. तो ये एरिया का मोमेंट ले लीजिए इस पॉइंट के बाद एल बाई टू. इसे ये एरिया का पूरा लोकेट हो सकता है यहाँ पर एम नॉट एल अपॉन टू ई आई. Oh, I'm sorry, this is not a taken, this is not a, this is not a triangle, it's a rectangle. Thank you. So I'm not square L upon 2 like that. So this was a simpler question. These were simpler questions, but now I'll show you the importance or the power of this method. So what exactly का 3 में ऐसा आप देखो तो the situation is like that. Hope I'm able to draw it. Like this. Over here and over here, as you can see, you have 2i over here given in the problem. You have I over here given.
डेफिनेटली आई के आ जाने से एक बात में यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं आपको पहले स्टार्ट करा देता हूँ प्रॉब्लम, फिर आप सॉल्व करिए. As you can see that there will be PL about here, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है. This is L and this is P. So this is going to be a shear force diagram like this. और फिर एंटी क्लॉकवाइज नीचे, प्लस PL एरिया है आपका. So एंटी क्लॉकवाइज नीचे. We have done this. And we have a 0 plus PL like that. अब यहाँ पर आपको M by EI डायग्राम बनाना है, ठीक है. सो बी केयरफुल, ये तो M डायग्राम है आपका, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. अब M by EI जब बनाओगे तो यहाँ पर I की वैल्यू 2I है, उसे सब्स्टिट्यूट करोगे, और बीच में I में जंप आ रहा है. टेक केयर, I में देयर इज अ सडन जंप ओवर हियर ऑन दिस interface. Because of this sudden jump, definitely there will be some change in the sudden change in the M by A diagram. So you have to address that issue and then you have to solve that problem. Come on, do it.
So just to slope is PL square upon 24 EI. राहुल, you did a calculation mistake. पहले मैं M by EI डायग्राम एक बार चेक करा देता हूँ कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, फिर मेहनत करिएगा आप, ठीक है? तो पहले M by EI डायग्राम देख लीजिए सही है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। I'll use a green pen for that. M by EI के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग PL by 2EI लिखेंगे, right? This is 2I and this is I as written. कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां तक मैं चलूंगा इस तरह से। फिर जैसे ही मैं यहां आऊंगा, यहां पर मुझे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू चेक करना पड़ेगा कितना है। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू यहां पर आएगा, ये माइनस पीएल है, या एरिया होगा आपका पीएल बाई 2। तो माइनस पीएल में मैं पीएल बाई 2 ऐड करूंगा, तो इट इज नथिंग बट माइनस पीएल बाय 2। ठीक है, तो माइनस पीएल बाई 2 इंटू 2EI, मतलब 4EI इंटू 2, तो ये हो गया। तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा? ये वाला वैल्यू आ जाएगा सर आपका, एक काम करते हैं, इसको पीएल यहां लिखते हैं, ठीक है, माइनस हटा देता हूं, रिक्वायर्ड नहीं है। तो सर ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपका पीएल अपॉन 2EI इंटू 4EI। नो राहुल, अगेन डूइंग सम मिस्टेक। अब इसके बाद क्या होगा? देयर इज अ सडन जंप, तो पीएल अपॉन 4EI, तो यहां पर है वैल्यू, देखो ये कैसा आया, पीएल अपॉन, मैं इधर लिखता हूं 2EI, ठीक है, तो दिस इज पीएल अपॉन 4EI। नाउ there is a sudden change in I from 2I to I, so definitely there will be a new value PL upon EI. So this is PL upon EI. PL upon 2EI. 2 is already there. So again you will reach this value like this. And you will continue this like that. How many students have drawn this as a M by EI diagram? कितने लोगों का M by EI diagram सही है? Okay हितेश, very good. राहुल तेरा M by EI diagram यही है? प्रशांत का भी यही है। भूषण 7PL स्क्वायर, इट्स नॉट 7 भूषण, 7 में गलती है बस। बाकी अदर स्टूडेंट्स, उर्वी, निलेश, धवल, आफ्ताब, व्हाट अबाउट यू गाइस? निरंजन says 5, yes, yes, करेक्ट। अरे करना क्या, एरिया तो कैलकुलेट करना है यार इसमें। वैसे 3 एरिया में डिवाइड कर दो, 1, 2 and 3। So theta will be equal to this entire area. We know that for cantilever beam ये होना है। This is A and this is B. So between A and B, you can take the area and you'll get this. So just A1 plus A2 plus A3 you add, you'll get
5PL square upon 16 EI. Yes, Trushti, correct. And Y as X PL cube upon 16 EI. You have to determine the value of X. Actually, my PL. Tell me like this. What factor you will get? A by B. Tell me like that. Three PL cube upon 16. Correct. Correct. Just do the calculation like this. So you will be having y1 over here as this length. Correct. So we have a PL square upon 16 EI. You can do the calculation and just let me know whether you get it or not. PL
Then you have to do it similarly for other guys also. A2Y2 and A3Y3. A2Y2 would be, A2 is so this PL upon 2EI. Okay. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 24. PL upon 24. Okay. So this would be your first term. Calculate other two terms and get the answer. And yeah, nextly, I like to make a point that as you all know that management is having some issue with this, that maybe because of attendance or something like that. So I'll just say that key you take care of that, and any one student from you, है ना, who is regular, maybe Bhushan, you can take an initiative, okay, or Bhushan is there, anyone else, I mean Dhaval, anyone from you can talk to me, just give me a call, and just let me know that what kind of issues you guys are facing, like maybe regarding the timing, or maybe regarding the confidence, or maybe regarding the whatever it is, I mean. So until and unless you won't discuss your problem with either me or with management, I mean, we won't be able to resolve it, right? So you can just treat me like your, I mean, elder brother, and just let me know that if you are having any issues, maybe related to time, or maybe you are not getting enough confidence that whether we are able to do it or not. So just let me know about that. So anyone can be a representative from you guys, okay, and can communicate. Because there is one student, I exactly don't remember his name, Malay, not Samyak, I think. Okay, he called me one day and he said to me that, sir, I'm making one group, one doubt discussion group, and I think since he himself is not involved in gate preparation, okay, so I think maybe for all of this program he is fine as a coordinator, but otherwise I need a coordinator or a student representative who is among you, right? Who is preparing for gate. So it would be much better for me to communicate and to solve your queries, right? Maybe next week, I'm not, I mean, ensuring you that 100%, but possibly there are two good news. I can say that possibly it's all under process right now by your management, that will start simultaneously with math, so that you can have parallel two subjects going on. Maybe next to next week or next week. Let's see when they give us permission to do that. Next, I'll arrange one session with one of my student. Okay, maybe one of my student is in who is a gate topper, like all India rank 7th, or maybe all India rank 37th, or maybe all India rank. There are various students of mine who have secured the different ranks. So any one of them, I'll just I have to check when they are available. So I'll just ask them and I'll arrange one session of those guys with you. Any one of them, maybe two of them, so that and most of them are from Maharashtra only. So I'll make sure that those students are from Maharashtra, maybe more possibly from Mumbai only. Okay. So one of I remember is from KG Somaiya. He got 7th rank last year, last to last year. Currently he's in ISC Bangalore. Okay, or maybe other students, some from Amravati or some from, maybe I'll connect with you Maharashtra students only, so that it's, because you will feel more that कि यार ये तो हमारे साथ वाले ही हैं, है ना? And maybe from much a lower grade college as compared to you guys. So if they can do it, you can also do it. That's what the agenda is. Okay. So see, I'm like passionate about making career of students, right? So
if students are not interested now, slowly and slowly, maybe for me, see, even 5-10 students are interested, they are more than sufficient for me to teach, right? But for management, they want to have an attendance, right? So you have to, take care of that. So anyways, Bhushan, either you can talk to me right now or you can communicate with me uh, today. Anytime you can WhatsApp me, we'll set a time and we'll talk about any. Yes, sir. Yes, sir. सर लास्ट संडे का जो प्रॉब्लम था वो एमएसटी की वजह से बहुत लोग आए नहीं, Hmm. तो Yeah, I knew that. अटेंडेंस बस लास्ट संडे। Bhushan, as of my experience, it's not about last Sunday. It's like around being 2-3 हफ्ते से मैं अगर अटेंडेंस भी चेक करूंगा, मेरे पास रहती है ना अटेंडेंस, तो आई डोंट थिंक कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, मतलब 10 to 15 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर कंटिन्यूसली देयर. आई नो देम, लाइक वन ऑफ इज यू, ऑफ कोर्स, धवल इज देयर, एंड इफ आई जस्ट चेक द नेम्स ओवर हियर, जो मुझे ध्यान है, मे बी और भी हो सकते हैं आप में से. धवल इज देयर, आई रिमेम्बर धवल. नीलेश इज देयर. मोनू नहीं आ रहा है आजकल. मोनू वाज देयर रेगुलर, बट मोनू अलेक्जेंडर वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू कम. उर्वी इज देयर, राइट? Srushti is there. Sonali, maybe I think she is there. Rutuja is there. Nilesh is there regularly. So regularity is something which is important, guys, for competitive exams. And as I told you, I don't know, I don't remember much, but at least I'm trying ki we pull in more subjects for you parallelly, so that you get more confidence that before this gate 21 you are able to finish off with at least 50-60 marks from my side. From my side means this Prerana scheme side, not my side, this Prerana scheme side. Since I'm representing Prerana scheme right now, so let's see what it happens. Next would be the other thing कि व्हाट आई सेड टू यू कि कोई भी एक अपना सेमेस्टर का सब्जेक्ट उठा ले आप. ठीक है, थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं आप देख लीजिए. कैन यू टेल मी? मैकेनिकल गाइस, देखो सिविल के बच्चे आप लोग एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हो, जैसा मैंने आपसे कहा ज्यादा. ठीक है, और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके पता है अभी कुछ? सब्जेक्ट्स यू हैव इन थर्ड ईयर? फ्लूइड मैकेनिक्स थर्ड ईयर में, भूषण. हीट ट्रांसफर इज देयर, राइट? Fluid machines is there. Okay. Manufacturing process, I'll take care. Dynamics of machines, right? DOM, right? तो डायनामिक ऑफ मशीन आप सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका सेमेस्टर भी कवर हो जाएगा. और राहुल यादव, आई आई पढ़ लीजिए आप. इंडस्ट्रियल, यस, इंडस्ट्रियल और डॉम आप कॉलेज का पढ़ लीजिए अच्छे से. आई एम डैम श्योर कि आपके कॉलेज का पढ़ लोगे तो गेट का काम हो जाएगा. गेट का सिलेबस हमेशा छोटा होता है कॉलेज से. बस थोड़ा सा चैलेंज ये होता है कि गेट में कंपटीशन के हिसाब से टीचर पढ़ाता है, तो उनका थोड़ा तरीका अलग होता है. बट डॉम में इतना ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, सो आप डॉम पढ़ सकते हो तरीके से. ठीक है, डॉम हो गया आपका. इंडस्ट्रियल हो गया. इंडस्ट्रियल भी आप अगर अपना कॉलेज का पढ़ लेते हो तो काम हो जाएगा आपका. डॉम इंडस्ट्रियल हो गया. एंड लेट्स सी, आई एम ट्राइंग कि आपका, मैं ईएम नहीं, सॉरी, सॉम एफएम एंड मैन्युफैक्चरिंग करा दूंगा. सॉम एफएम मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा अगर आपका, तो काफी सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे. मैन्युफैक्चरिंग इज हैविंग अ वेरी गुड वेटेज. Okay, but for doing all those things, we need to continue this, and if it continues, then definitely you have to be with. I mean, आपको attentive रहना पड़ेगा. At least some students has to be regular. और सिविल में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके सेमेस्टर में, जरा बता सकते हो अगर कोई सिविल का स्टूडेंट है तो? जियो टेक्निकल, स्ट्रक्चर एनालिसिस. ओके. SA2 क्या होता है यार? SA2 का फुल फॉर्म बताओ.
आरसीसी, देखो आरसीसी, स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन, ये तीनों एक जैसे, मतलब एक के बाद एक के सब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट यू डू स्ट्रक्चर एनालिसिस, देन यू डू डिजाइन, राइट? स्ट्रक्चर एनालिसिस टू, ओके। तो देखो स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी और डिजाइन, मतलब आरसीसी और कंक्रीट, आरसीसी और स्टील, सॉरी, आरसीसी, स्टील और स्ट्रक्चर्स, ये तीनों सब्जेक्ट में मेहनत ज्यादा है और थोड़े नंबर कम है, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी इज आरसीसी, आई बिलीव, राइट? जियोटेक का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, ठीक है। तो अगर आप जियो टेक्नोलॉजी अच्छे से करते हो तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है आपका जियोटेक। और मेरे हिसाब से जियोटेक आपको एक सेमेस्टर में कंप्लीट होता भी नहीं होगा, एक दो सेमेस्टर तक चलता होगा, मतलब पार्ट वन पार्ट टू में होता होगा। तो आप थोड़ा गेट का सिलेबस की बुक खरीदिए और वहां से मैच करिए आपके सिलेबस और उस पे, ठीक है। एनवायरमेंट पढ़ चुके हो तुम लोग? एनवायरमेंट कब पढ़े हो सिविल के स्टूडेंट्स? सर्वेइंग पढ़ चुके हो? सर्वेइंग पढ़ चुके हो? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके हो? ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग, ये इजी सब्जेक्ट्स है बहुत। ट्रांसपोर्टेशन सर्वेइंग पे अच्छे मार्क्स आते हैं, ज्योमेट्री बेस्ड है सर्वेइंग तो पूरा, ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है, और एनवायरनमेंट, ये तीन सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो आप लोग। कभी मैं आपसे हमेशा कहता आ रहा हूँ कि स्लोली एंड स्लोली आप फोकस करें, धीरे धीरे नंबर बढ़ाएं, पहुंच जाओगे आप, ठीक है। तो anything apart from that you want to discuss with me regarding maybe the problem you are facing because you are not able to attend the classes? You can freely message me. You have my WhatsApp number, or you can talk to me. No problem with that. Okay. So maybe, hopefully, you'll get some good more subjects added parallelly for your preparation. But that is under streamline right now, so it's not been confirmed. So once it gets confirmed, you will be notified. Okay. So let's call it a day. Okay. And see you next week. Whatever is the schedule. Okay, guys. Chaliye, take care, and I'll give you some problems. Just a moment. चलिए आप लोग you can carry on. I'll add some problems अगर मुझे कुछ लगता है तो I'll add it into your sheet. ठीक है? Otherwise we'll continue next week. In the meantime अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी आती है तो आप प्रीवियस ईयर जितना सारा मैं पढ़ा चुका हूँ उसको प्लीज सॉल्व करें. Whatever I have taught you starting from, एक बार रिवाइज कर लो. देखो अगर मैं आपको बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं है, एक सब्जेक्ट ये आपके ऊपर लोड बन जाएगा अगर अभी प्रिपेयर नहीं करके रखा इसको तो, और दूसरा एक टेक्निकल चालू हो जाएगा और तीसरा एक मैथ चालू हो गया अगर तो तीन तीन सब्जेक्ट साथ में हो जाएंगे, इनको मैनेज करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. सो फॉर दैट रीजन आई एम टेलिंग यू दैट कि प्लीज कंप्लीट सॉन्ग राइट नाउ. आज अब नेक्स्ट वीक में जब भी क्लास होता है आपका उससे पहले पहले आपका सॉन्ग का पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हो जाना चाहिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी में डाउट आए तो आई एम देयर फॉर यू. दैट्स इट. You don't have to worry about that. To do that जल्दी से मतलब, और ताकि आगे आप जब पढ़ो तो आपके पास टाइम हो अपने सब्जेक्ट का, तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, थ्योरी रिवाइज करो, और अगर ये हो जाता है फिर भी टाइम बचता है तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोई सेमेस्टर का सब्जेक्ट उठा लो, इंडस्ट्रियल उठा लो, इंडस्ट्रियल इजी है, गेट के सिलेबस से मैच करो, जो जो पार्ट आपकी यूनिट्स मैच कर रही है, 5 यूनिट में से 3 यूनिट मैच कर रही है तो 3 यूनिट को पहले खत्म कर लो, या तो कॉलेज के टीचर से कर लो खत्म, या गूगल कर लो, या एनपीटीएल से कर लो, whichever way you like, but just finish off with it. That's it. Okay. कॉलेज के कंपैरिजन के क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे गेट में, मैं बता रहा हूँ आपको. कॉलेज में सिलेबस वास्ट होता है बहुत ज्यादा, कॉलेज का सिलेबस हमेशा वास्ट होता है, और आपकी तो यूनिवर्सिटी भी अच्छी, तो प्रोफेसर्स भी बेटर होंगे बहुत, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. बट इंजीनियरिंग में सिलेबस बहुत वास्ट होता है, गेट का सिलेबस कंप्रेस्ड होता है, तो आप देखोगे कि जो गेट में है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. जैसे डिफ्लेक्शन में ही ले लो, डिफ्लेक्शन में ही आपने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, मुझे याद, आपको याद होगा, मुझे भी याद है.
कि 3-3 4-4 के सब वो डबल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व किया करते थे आप लोग। फिर वो मक्लॉयज मेथड, डिसकंटिन्यूटी फंक्शंस और ऑल सब आता था। गेट में रिक्वायर्ड नहीं है वो। Gate is a easier compressed version of your engineering, but the point is that you have to take care of 10 subjects together. That's why it becomes difficult. The only reason is that you have to take 10 care subjects together. But if taken together smartly, then there is no problem. Smartly in the sense कि 10 के 10 सब्जेक्ट्स को आप एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके उसको इंटरवल में रिपीटेडली हर 15-20 दिन में रिवाइज कर रहे हो। एक तो आप टीचर के साथ पढ़ रहे हो और दूसरा आप हर 10 दिन 15 दिन में उसको रिवाइज करते चले जा रहे हो। देन आई गारंटी यू कि वो सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर बैठना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओके, दैट इज द लॉजिक, दैट इज द मंत्रा फॉर प्रिपेयरिंग, दैट्स व्हाट इट इज। चलो ठीक है, टेक केयर, सी यू सून। Any other queries? If not, then you can leave the session, no problem.